Good afternoon, all dear students. Last time we had learned what is excretion, okay, and structure of kidney, excretion in human being. Okay, today I am going to teach you coordination. So, students, there are two questions. First one is sometimes while eating we bite our own finger or tongues by mistake. So, answer of this question is when we are hurriedly gulping some things or if we are not concentrating on the eating, the coordination between our movement is lost. This causes biting of our own finger or tongues by mistake. This process painful impulse and transmit it to our brain through the sensory nerves. We feel pain for such an action and then we may start eating carefully. Understood? Question number 2. Sometimes we choke while eating in a hurry. ऐसा क्यों होता है? Choking at the time of eating in a hurry is a reflex action. There is a small flap called epiglottis between the opening of trachea and esophagus. This flap is present in the pharyngeal region when the food or waste is entering in esophagus. The epiglottis closes the opening of trachea tightly. This prevents wrong entry of water or food into trachea. But if we are swallowing, swallowing in a hurry, this coordination may be lost. The food particle or waste water droplet may try to enter trachea. This causes instant choking. This is a protective reflex action due to which respiratory passage is kept free of any food or water. ठीक है, तो देखो जो फ्लैप होता है वो एपिग्लॉटस और ट्रकिया के बीच में होता है, एक ओपनिंग होता है इसोफेगस में, और ये जो फ्लैप होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फेरेंजियल रीजन में। जब फूड आ जाता है, फूड और वाटर एंटर होता है इसोफेगस में, तो एपिग्लॉटस क्लोज हो जाता है, क्लोज द ओपनिंग ऑफ ट्रकिया टाइटली एंड ये जो दिस प्रिवेंट रॉन्ग एंट्री ऑफ वाटर और फूड इनटू ट्रकिया। अगर ये खुला रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? लंग्स में वाटर जाने से हमें क्या होता है? खांसी आ जाती है, ठीक है, चॉक हो जाता है खाते समय। तो सेवरल डिफरेंट ऑर्गन system function in multicellular organism. Their life goes on smoothly if there is coordination between different organ system or organ and the stimuli in the surrounding. Depending upon this, we can say that systematic regulation of different process can be called control, and bringing about the different process in the proper sequence can be coordination. कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? जो हमारे अलग अलग ऑर्गन हैं एक दूसरे में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की वजह से क्या होता है? जो प्रॉपर फंक्शन होता है बॉडी का वो क्या होता है? कैरी होता है, ठीक है। तो देखो, if any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between different system and organ participating at different step of that activity is necessary. If due to lack of coordination or some other factor there is confusion at any step, the activity may not be completed. There should not be any randomness at any step. There need to be proper coordination between internal activity of the body resulting from various factors like body temperature, water level, enzyme level, etc., or stimuli arising the surrounding environment. Proper coordination between various systems of an organism help to maintain a state of equilibrium called homeostasis, which is necessary for optimal efficiency of the body.
तो हर एक इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बॉडी में जो कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, एक दूसरे में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि जो बॉडी का फंक्शन है वो स्मूथली परफॉर्म कर सके। अभी प्लांट में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट डू नॉट हैव एनी सिस्टम लाइक द नर्वस सिस्टम और मसल सिस्टम ऑफ एनिमल. Then how do plant bring about movement? In plant movement are mainly in the form of response giving to the stimuli की वजह से एक दूसरे को रिस्पॉन्स मिलता है। इसमें ऐसा प्रॉपर कुछ सिस्टम नहीं होता है। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वैसे सिस्टम नहीं होती है। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें क्या होता है, स्टिमुलाई से उनको रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे कि देखो अभी पोलन ट्यूब ग्रोविंग टूवर्ड्स द ओल, पोलन ट्यूब है वो ओल के टूवर्ड्स ग्रो हो रही है, मतलब जिधर ओल है उधर उसको ग्रो होना है। फोटोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, जैसे कि जिधर लाइट है उधर ही प्लांट का क्या होने वाला है, ग्रोथ होने वाला है। जैसे कि सन के टूवर्ड्स ही प्लांट क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। हमने उस पॉट को हॉरिजेंटल रख दिया, फिर भी प्लांट का ग्रोथ सन के टूवर्ड्स हो रहा है। प्लांट बेंड टूवर्ड्स द सन। थर्ड इसमें देखो ट्रेग्नोट्रॉपिक रिस्पॉन्स भी देखो, जैसे कि जो वेल है वो वेल ऊपर ही जा रहा है, टेंडेंट्स। ठीक है, तो ये स्टिमुला के यहाँ से रिस्पॉन्स से वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। देखो मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट in response to an external stimuli is called tropism or tropic movement. The shoot system of any plant responds to the light stimuli, that is, it grow towards the source of light. The movement shown by plant towards the source of light is called phototropic movement. अगर सन के तरफ ग्रो होते हैं तो उनको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से होता है, ग्रोथ जो होता है, मूवमेंट ग्रोथ कुछ भी रहने दो, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से होगा तो उसको ट्रॉपिज्म नहीं तो ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक ग्रेविटेशंस एंड वाटर, दिस रिस्पॉन्स आर कॉल्ड gravitrotropic movement and hydrotropic movement respectively. Movement shown by plant in response to specific chemical is called chemotropic. अगर मूवमेंट कोई केमिकल रिस्पॉन्स से हो रही है तो उनको केमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओल। तो देखो ऑल द अबव मेंशन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट आर रिलेटेड विथ ग्रोथ, hence all such movement are collectively called growth relevant movement. ये सबको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ रिलेवेंट मूवमेंट कहेंगे। तो देखो स्टूडेंट, डू यू नो टेंडेंट्स ऑफ क्लाइंबर्स आर सेंसिटिव टू टच। द हार्मोन लाइक ऑक्सिन प्रोड्यूस्ड इन अपाइकल पार्ट ऑफ द शूट हेल्प इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल एनलार्जमेंट के लिए जो ऑक्सिन होता है वो हेल्प करता है। हार्मोन लाइक गिबरलिन हेल्प इन स्टेम इलोंगेशंस एंड साइटोकाइनिन्स हेल्प इन सेल डिविजन। द हार्मोन abscisic acid is effective in preventions and retardations of growth, leaf and wilting etc. तो ये था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड थिंक अबाउट देम। देखो टच मी नॉट, टच करने से ही क्या हो जाते हैं, लीव्स क्लोज हो जाते हैं, मतलब ये क्या है, स्टिमुलाई से उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप, तो वो वीनस फ्लाई जो है वो लीव्स में ट्रैप हो जाता है लोटस से। फिर बाद में बाल्सम है, ये सब क्या है, सेंसिटिव प्लांट है। On careful observation, it is seen that in plant like touch me not mimosa, movement also occur at the place
other than water it has been touch. Hence we can infer that information about touch must have been relay within the plant from one place to another. Plant use electrochemical impulse for transfer of information from वन प्लेस टू अनदर. ये जो प्लांट है तो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स सेल्स से इम्पल्स की मदद से ये क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र करते हैं. प्लांट सेल चेंज देयर शेप बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देयर वाटर कंटेंट एंड देयर बाय being about the movement of plant. Some specific movement of the plant do not lead to the plant growth. Such movement are called growth irrelevant movement. As a response to change in surrounding, plant hormones bring about various movement in plant. तो अगर प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे किसी मूवमेंट को तो उसको बोलेंगे ग्रोथ इररिलेवेंट मूवमेंट. ठीक है, तो देखो in the plant called Venus flytrap, there in the trap that appear and smell like flower and deceive insect. When an insect visit that flower like trap, the trap close up and the trap insect in digested by the plant. वो ट्रैप किया जाता है उस इंसेक्ट को और वो प्लांट क्या कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. द लोटस फ्लावर ओपनिंग ड्यूरिंग डे टाइम वाइल दैट ऑफ द ट्यूबरोज polyranthem open at a night. Fibrils present on the leaves of the insectivorous plant Drosera bends inwards as soon as insect land on the leaves and surround the insect from all sides. In balsams, the repentant fruits dehiscence burst open at the right time to the disperse the seeds. Okay student, this was our today's लेक्चर. कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.